Okay guys, so welcome back to AS Business 9609 classes. हमारे पास last class जो हमारे पास थी, we are on the last area of chapter management. Okay, तो हमारे पास जो last class थी उसके अंदर we are done with the management and its functions. हमारे पास ये जो Henry Fayol वाला concept था, functions of the management, we are done with that. हेनरी फेयोल की जो हमारे पास थ्योरी थी फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट की, जिसके अंदर हमारे पास प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, हमारे पास था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारा एरिया हमारे पास कंप्लीट हो गया था. कोऑर्डिनेटिंग, देन वी आर डन विद द स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास एरिया ऑफ द मैनेजमेंट था, बेसिकली हमारे पास है क्या कॉन्सेप्ट, एक थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं. ठीक है, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इजी हो टू कोप अप विद द क्लास. बेसिकली मैनेजमेंट के रिलेटेड इन एएस लेवल वी हैव टू डिफरेंट थ्योरिस्ट या टू डिफरेंट हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं. एक हमारे पास है हेनरी फ्योल और एक है हमारे पास हेनरी मिन्सबर्ग. तो लास्ट क्लास के अंदर वी स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट. पहले हमने मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया कि मैनेजमेंट होती क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव एन इफेक्टिव मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. Then we discuss the different levels of management: senior management, middle management, junior management. Then we start with the Henry Fayol's concept कि हेनरी फ्योल जो हमारे पास इंडिविजुअल हैं, उन्होंने क्या किया कि मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है एंड व्हाई दे नीड टू परफॉर्म दीज फंक्शंस एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इसके बगैर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकती. देन वी डिस्कस ईच एंड एवरी फंक्शन. प्लानिंग हमने डिस्कस किया, ऑर्गेनाइजिंग हमने डिस्कस किया, कोऑर्डिनेटिंग हमने डिस्कस किया, स्टाफिंग हमने डिस्कस किया, और इसके बाद हमने लास्ट के अंदर डिस्कस किया था कंट्रोलिंग. तो सिंपली वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हेनरी फेयोल एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट. अब हमारे पास जो थ्योरिस्ट हैं, थ्योरिस्ट तो नहीं कहेंगे, हमारे पास इंडिविजुअल इन द मैनेजमेंट हमारे पास, वो हमारे पास है हेनरी मिन्सबर्ग. अब हमारे पास ये जो हेनरी मिन्सबर्ग इंडिविजुअल है, ये कौन है हमारे पास? ही बिलोंग्स टू द मॉडर्न स्कूल ऑफ मैनेजमेंट. अब सर, मॉडर्न स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या डिफरेंस था, इस चीज को दोबारा से मैं रीइंफोर्स कर रहा हूँ. देखो, हमेशा एक प्रोसेस होता है, थॉट प्रोसेसेस की अगर हम बात करें, थोड़ा सा डिस्कशन, आई वांट यू गाइस टू कंसंट्रेट, मजा आएगा, समझ आएगा. अब हमारे पास ये जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट है, और हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट है. यू ऑल आर जेंजी, ठीक है, सारे के सारे जेंजी हो, ठीक है, मैं मिलेनियल हूँ, ठीक है. तो हमारे जो पर्सपेक्टिव है और हमारे जो पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है और हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट है, क्वाइट डिफरेंट है फ्रॉम दी ओल्डर वंस. अब कोई पर्टिकुलर इशू होता है तो वी आर गोइंग टू कम अप विद द मॉडर्न सॉल्यूशंस, वी आर गोइंग टू कम अप विद द मॉडर्न टेक्निक्स टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर इशू. ठीक है, या हमारा कोई पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग अ थिंग, वो डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन, बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन, टेक्नोलॉजी, एआई, रील्स, शॉर्ट्स, इसकी बेसिस पे. जो पुराने लोग हैं हमारे पास, उनके जमाने के अंदर ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एआई, शॉर्ट्स, रील्स, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ नहीं था, तो उनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है. तो इसी तरीके से हमारे पास हुआ ये मैनेजमेंट के अंदर भी, और हर चीज के अंदर कि हमारे पास हर चीज के अंदर इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट आती चली गई. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केटिंग, तो हमारे पास, आपके सामने मैं एग्जाम्पल रखता हूँ, हमारे पास एक पान मसाला पाकिस्तान के अंदर, देयर इज अ पान मसाला, नास पान मसाला, इट्स वन ऑफ द पान मसाला टाइप, सुपारी टाइप आप कह लें. इसकी एडवर्टाइजमेंट ऑन एयर हुई थी इन पाकिस्तान, एंड इट वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट रॉयल एंड द लग्जरियस एडवर्टाइजमेंट ऑफ दैट टाइम, because that advertisement was on television. Number two, it was the shoot of that particular advertisement was on cruise. ठीक है, तो it gives a luxurious image. अब हमारे पास ये सारी चीजें बहुत कॉमन है. Now we have PRs, collaborations with the celebrities, with the sports personalities and all. So this is known as a modernization in the advertisement. तो अब हमारे पास, people do not watch the advertisement on the television. They do not read that much newspaper. तो उसके ऊपर advertisement वगैरह इतनी ज़्यादा effective नहीं है. Now we have internet, social media, sponsored ads, PRs, collaborations. So these are the recent innovations in the advertisement and promotion.
तो सिमिलरली मैनेजमेंट के अंदर भी यही हुआ कि हेनरी फियोल बिलोंग्स टू द ओल्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट and he actually laid the foundation and the concept of management in an organization. Okay, there is a thing that is known as management. There is a particular thing in an organization which is known as management, and it must be effective and it needs to perform the functions effectively so that the business can achieve its objective. This is the case. Then we have Henry Mintzberg, who belongs to the modern school. Modern school, in that case, he comes after the Henry Fayol. So that's why he belongs to the modern school. And he actually used an idea of Henry Fayol. He actually used an idea of Henry Fayol and he introduced, okay, there is an individual in an organization who is known as manager. पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है उसका जो फेस है, that face is known as the manager. Manager becomes the personality, or the manager becomes the face of the management or the organization. So this particular manager personality, this manager's personality must be versatile. Now what is versatility? Versatility का मतलब हमारे पास होता है कि for example in different situations you can become a person who can dilute or who can get into that particular situation, and you can play different roles according to the situation. Let's say for example हमारे पास कुछ particular Hollywood Bollywood actors हैं, actresses हैं, their personality is very versatile. So that's why they play the different roles. They play the role of the main lead, villain and all. So it depends on the personality. So in this case, the manager personality, according to the Henry Fayol, manager's personality must be versatile, number one, and he must possess different skills. Why the manager must have the different skills? Because he has different roles to play in an organization. The manager of an organization has different roles to play, according to the Henry Mintzberg. कि जो individual organization के अंदर manager है, he has different roles to play, so that's why his personality must be versatile and he must have different variety of skills so that he can play the roles effectively. This is the concept of the Henry Fayol. Henry Mintzberg, sorry. Henry Fayol का पूरा concept क्या था? It's about the management. Henry Fayol talks about the person, individual, the manager of an organization. Now in Henry Mintzberg case, now we need to understand कि सर हमारे पास ये जो हेनरी मिंट्सबर्ग है वो क्या कह रहे हैं. वो कह रहे हैं द मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव डिफरेंट जैकेट्स और डिफरेंट हेड्स. Different jackets, different hats. What's the concept of this? For example, when there is a situation of leading, let's suppose there is any particular project or there is a teamwork. So the manager is going to become the leader in that thing. The manager is going to become the leader of that particular team or the project. So he must have the leadership skills and he's going to wear the jacket of the leader and he's going to motivate, he's going to provide the guidance, he's going to provide the skills to the workers and all. So according to the situation, the manager is going to use different skills in order to become or in order to play that role effectively. This is the case. तो इन टोटल हमारे पास हेनरी मिंट्सबर्ग ने जो डिफरेंट रोल्स आइडेंटिफाई करे हैं वो 10 मैनेजरियल रोल्स हैं. कितने रोल्स हैं टोटल? इन एक्चुअली 10 मैनेजरियल रोल्स हैं. तो वी आर गोइंग टू मेक द लिस्ट ऑफ ईच एंड एवरी रोल. हम यहाँ पे डिफरेंट लिस्ट बनाएंगे और डिफरेंट लिस्ट को बनाते हुए वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी रोल के क्या क्या रोल्स हेनरी मिंट्सबर्ग ने आइडेंटिफाई करे हैं जो कि मैनेजर प्ले करेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. तो गुड टू गो, आज स्टार्ट करते हैं. रोल नंबर 1 इज ऑफ लीडर. और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेट करके सुनना है बिकॉज इन दी एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ टास्क रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. सो आई वांट यू गाइस टू कॉन्सेंट्रेट. ठीक है. So the first role that the Henry Mintzberg identified, it's known as the leader. Now who is leader? We are done with the whole concept of the leadership. Leader is an individual who guides, who convinces, who influences, who encourages and motivates the others. So whenever there is any particular project, whenever there is any particular teamwork, or whenever there is any particular departmental responsibility, so the manager is going to become the leader of a team or the project. और वो यहाँ पे वर्कर्स को गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, मोटिवेट करेगा,
अपनी पर्टिकुलर पर्सनालिटी को यूज करेगा टू इन्फ्लुएंस एंड टू encourage the workers so that particular team can perform the task or that particular objective can be achieved. सो द मैनेजर मस्ट हैव द लीडरशिप स्किल्स. अगर मैनेजर के पास लीडरशिप स्किल नहीं है कि कब कौन सा लीडरशिप स्टाइल यूज करना है, कब वर्कर्स को इन्वॉल्व करना है, कब वर्कर्स को इन्वॉल्व नहीं करना, कब वर्कर्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करके उन्हें मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है, कब उनके साथ कम्युनिकेट करना है, सो ही कैन नॉट बी एन इफेक्टिव लीडर. And if he fails to become an effective leader, so the manager is not a particular good manager and he is actually failing in his role. That's a concept of leader. So leader shape is one of the role that is played by the manager whenever there is a project team working. नंबर वन. अब जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल के अंदर क्लासेस हैं, उसके अंदर क्लासेस के जो लीडर है वो कौन है? टीचर्स हैं हमारे पास. इसी तरीके से सब्जेक्ट टीचर्स के लीडर एचओडीज हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं. स्कूल के ओवरऑल लीडर हमारे पास प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल है. So all of these particular individuals must have the leadership skills. Principal के पास अगर leadership skill नहीं है तो how is going to provide the guidance to the staff and to the workers, teachers that means. और अगर पर्टिकुलर हमारे पास यहाँ पे जो एचओडी है, सब्जेक्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनके पास अगर लीडरशिप स्किल नहीं है, सो हाउ इज गोइंग टू प्रोवाइड हिज लीडरशिप स्किल्स टू द and how he's going to lead the number of teachers. तो each and every position must have the leadership skill. जहां जहां आपको यहाँ पे मैनेजरियल पोजीशन नजर आ रही होगी. नंबर टू हमारे पास the second role is of liaison. Now, sir, what is liaison? Liaison means become a bridge. हम ब्रिज क्यों यूज करते हैं? ब्रिज क्या करता है? बेसिकली एक रोड को दूसरे रोड से कनेक्ट करता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास शॉर्ट ब्रिजेस होते हैं बाहर की कंट्रीज के अंदर. हमारे पास वी हैव द शॉर्ट ब्रिज कि एक पर्टिकुलर पाथ से दूसरे पाथ पे कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज यूज करते हैं. तो ब्रिज का मतलब क्या है? द सॉर्ट ऑफ कनेक्शन. This is the case. So liaison means become a bridge. So the manager becomes a bridge between an organization and the external context. External context का मतलब क्या हुआ हमारे पास? Supplier, government, banks, other institutions, other businesses. So the manager is going to become a bridge between an organization and the other parties, external contacts such as banks, suppliers, government, other businesses, so that the business activities can be carried out. कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट लीगल इश्यूज हैं या लीगल पर्टिकुलर कुछ वर्क्स हैं, सो द मैनेजर इज गोइंग टू बिकम द ब्रिज बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट. Similarly, अगर कुछ particular supplies के related we are in need of the supplies and the supplier से कुछ particular discussion है, so the manager is going to become a bridge between the organization and the supplier, so that the business activities and the operations can be carried out. Number two. Number three हमारे पास है that is known as figurehead. Now, who is known as the figurehead? Figurehead is known as the face of the event. Now the manager must have charming, good personality, good physical appearance as well, because he is the face of the event that are actually held by the organization or any particular corporate events or particular any events in which the organization is participating. अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज के अंदर कॉर्पोरेट डिनर्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास गेस्ट आते हैं. हमारे पास कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स होते हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें गेस्ट को, डिफरेंट लोगों को वेलकम करना होता है, सब कुछ है. So the manager is going to become the face of the event, and the manager is going to welcome the guests. The manager is going to become the face of the event. जैसे नहीं हमारे पास wedding receptions के अंदर होता है कि कुछ लोग हमारे पास front पे खड़े होते हैं and they are welcoming the guests. So we all know कि this particular event belongs to them and they are the face of the event. They are welcoming the guest and all. So the manager must have the charming personality. The manager must have the good physical appearance. तभी वो वहाँ पे face of the event होगा. That's a case, face of the event. Number 4 हमारे पास disseminator. Now, sir, who is known as the disseminator? A person who is responsible for the internal communication in an organization. अब सर इंटरनल कम्युनिकेशन का मतलब हमारे पास
The manager of an organization is going to communicate with the employees. उन्हें टास्क असाइन कर रहा है, उनसे अपर लेवल के जो डिसीजंस हैं या जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वो पास कर रहा है, उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है. And on the other hand, the manager is actually communicating with the board of directors and with the senior managers or the management as well. The executives उनको रिपोर्ट भी कर रहा है, उनको फीडबैक भी प्रोवाइड कर रहा है. तो मैनेजर बीच में हमारे पास है, जो कि इंटरनल कम्युनिकेशन का एक चैनल है. The manager becomes the official channel of communication in an organization with the employees, with the board of directors. So the manager must have the communication skills ताकि वो effectively employees के साथ भी communicate कर सके, board of directors को भी report और feedback provide कर सके. So the manager must have the good communication skills in order to become the disseminator. So one of the role of the Henry Mintzberg is that manager becomes the disseminator who is responsible for the internal communication throughout an organization structure with the upper level of the management and with the lower level of the management. Number 5, spokesperson. Now, who is known as the spokesperson? A person who becomes a person who actually speaks on the behalf of someone or something or some organization. जैसे हम देखते हैं न्यूज के अंदर स्पोक्सपर्सन ऑफ CNN, स्पोक्सपर्सन ऑफ BBC. तो who is known as the spokesperson? One who speaks on behalf of someone of some event or the organization. तो हमारे पास स्पोक्सपर्सन का कॉन्सेप्ट ये. तो अब लेट्स सपोज देयर इज एन AGM of a public limited company, annual general meeting. So in annual general meeting, the manager becomes the spokesperson on the behalf of an organization, and he's actually communicating and transmitting the information about the business financial progress, future targets, future prospects, this year's performance and all. इसी तरीके से कोई पर्टिकुलर इवेंट है when which the organization is participating. So in that particular event, the manager is going to become the spokesperson, and he is going to communicate the information of the business in that event with the different people and the different group of the people. So spokesperson, a person who actually transmits and speaks on the behalf of someone. Then we have monitor, who is known as the receiver. Now, sir, who is monitor? Who is receiver actually? देखो, मॉनिटर का मतलब है अ पर्सन हु एक्चुअली मॉनिटर्स, ही एक्चुअली ऑब्जर्व्स. दिस इज नॉट दैट पर्टिकुलर मॉनिटर ना कि वो हमारे पास क्लास के अंदर किसी को हम मॉनिटर बना दे टू लुक आफ्टर. नो, मॉनिटर इन दिस केस इज द रिसीवर. मैनेजर जो है वो विजिट कर रहा है एग्जीबिशंस, साइंस फेयर्स, कॉन्फ्रेंसेस, ट्रेनिंग सेशंस, रिसर्चेस और इन सारी चीजों को अटेंड कर रहा है. The manager actually receives the information from these particular events and these particular things. तो जब मैनेजर इन सारी चीजों को रिसीव करता है तो मैनेजर इज नॉट गोइंग टू कीप इट टू हिमसेल्फ. He is going to communicate and he is going to transmit the information with the group of the workers, employees, with the board of directors, with the other people in an organization. So monitor का मतलब हमारे पास होता है a person who monitors, who actually absorbs and observes. और जब उसके पास चीजें आ रही होती है तो वो फिर इन चीजों को आगे कम्युनिकेट करता है with the organization, with the people of an organization, so that the overall organization can get the benefit. Then we have the seventh one, which is known as resource allocator. The manager makes a financial budget. The manager makes a marketing plan. The manager decides and allocates the team. तो रिसोर्स एलोकेटर मींस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. रिसोर्सेस को लगाना है, कितना बजट बनेगा इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए कितनी प्रमोशनल स्पेंडिंग रिक्वायर्ड है, डिफरेंट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स हैं तो कौन से बंदे किस टीम के अंदर काम करेंगे, कितनी टीम्स अप्लाइड होंगी, एलोकेट होंगी. तो ये सारी की सारी जो रिसोर्सेज की एलोकेशन है, इट इज डन बाय द मैनेजर. So manager must have the good decision making skills. The manager must know the allocation of the resources and the manager must have the decision making skills ताकि वो effective decision ले सके regarding the resources allocation कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, यहाँ पे लगेंगे पैसे, इतने पैसे लगेंगे, इतना बजट होना चाहिए, ये लोगों को यहाँ पे अप्लाई कर दो, ये पर्टिकुलर टीम असाइन कर दो. तो decision making यहाँ पे इन्वॉल्व है. Then we have the eighth one, that is known as entrepreneur. The manager becomes an entrepreneur on the behalf of an organization. जब भी कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंटल या रिस्क टेकिंग
डिसीजंस होते हैं हमारे पास. सो द मैनेजर टेक्स अ डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. वी आर डन विद इन द यूनिट, वी आर डन विद द इंट्राप्रेन्योरशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन ना. यूनिट 1 के अंदर हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे वो चीज रिपीट हो रही है. तो मैनेजर मस्ट हैव द रिस्क टेकिंग एबिलिटी. The manager must have the decision making skill so that he can take the investmental and the entrepreneurial decision on the behalf of an organization. अगर मैनेजर के पास डिसीजन मेकिंग स्किल्स या इन्वेस्टमेंटल स्किल्स नहीं है, सो हाउ इज गोइंग टू मेक द डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कि लेट सपोज कि भाई कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंटल अपॉर्चुनिटी आती है regarding the product development or launching of the product. So the manager is going to use his entrepreneurial skills and he's going to take the decision on the behalf of an organization. तो अगेन उसके पास स्किल्स होंगी तो ये इफेक्टिव है, वरना नहीं है. नाइन्थ हमारे पास negotiator. Let's suppose there is a conflict or an industrial dispute between the management and the employees, trade union. So the manager is going to use his decision making, negotiation skills, and he's going to bargain and negotiate on the behalf of an organization with the trade union leader and the trade union members. The manager comes in the front to negotiate on the behalf of an organization. So if he doesn't have the negotiation skills and decision making skills कि किस हद तक negotiate करना है suppliers के साथ, government के साथ, other interested parties के साथ, trade union के साथ, तो हमारे पास how he is going to become a good negotiator on the behalf of an organization. अब सर गुड निगोशिएशंस कि किस हद तक हमें निगोशिएट करना है, टू हाउ मच एक्सटेंड वी नीड टू निगोशिएट, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो चीज फेवरेबल हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो नुकसानदेह ना हो. एंड ऑन द अदर हैंड इट मस्ट नॉट affect the relationship with the suppliers, government, banks, trade union leaders as well. कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा बेनिफिट के लिए वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द रिलेशनशिप विद द अदर पीपल. तो इस चीज को भी यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है. So you need to understand that if a manager does not have the negotiation skills, so how is going to negotiate on the behalf of an organization, and there would be a loss क्योंकि organization के तो favor में नहीं होगी वो चीज. And the last one, it is known as disturbance handler. Now what is disturbance and what is handling of the disturbance? देखो disturbance handler का concept हमारे पास ये है कि whenever there is a disturbance, so disturbance कैसे? Let's take an example. The organization is actually getting taken over by the other business. हमारा business take over हो रहा है, और there is a particular possibility of the merger. अब जब merger होगा, दो businesses unite होंगे and they are going to operate as a single unit firm. So there will be the chaos amongst the workers. क्या हमारी working conditions पहले जैसी रहेंगी? क्या हमारी job रहेगी कि नहीं रहेगी? क्या हमारी जो pay scale और हमारे जो benefits है क्या वो same होंगे कि नहीं? So these are the number of questions that is going to create unrest situation amongst the workers in an organization, and the workers will be disturbed. Na? Workers will be disturbed ho jayenge. They are not going to focus and they are not working with the efficiency and productivity. So the manager is going to handle that situation. The manager must have the social skills. सोशल स्किल्स का मतलब ये है कि उसके पास यहाँ पे एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोगों को कम्युनिकेट करे, उन्हें एनकरेज करे, उन्हें मोटिवेट करे कि भाई अगर ऐसा होगा तो वी आर ऑन द बैक, कुछ ऐसा मसला नहीं. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि द वर्कर्स को हमें यहाँ पे मोटिवेट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा ताकि वो इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें. द सेकंड केस इज विद द रिसेशन. कि लेट्स सपोज रिसेशन आ जाता है एंड द बिजनेस इज एक्चुअली कटिंग डाउन इट्स कैपेसिटी और इतनी ज्यादा सेल्स वगैरह नहीं हो रही, तो डिस्टर्बेंस है. So in that case, how you are going to handle the situation, how you are going to cope up with the situation with the workers. तो हमारे पास situation तो कभी भी सेम नहीं होती क्योंकि business environment is dynamic. तो manager must have the disturbance or the decision making skills to handle the disturbance. So overall आप ये देख रहे हैं कि जितने भी roles हैं उसके अंदर different skills required है. Now you need to understand कि these are the 10 roles. लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने division किया हुआ है 1 2 3. Then we have 4, 5, 6 and we have 7 till 10. Basically हमारे पास हुआ ये कि ये जो हमारे पास हेनरी मिन्सबर्ग हैं, इन्होंने इन एक्चुअल इन पर्टिकुलर 10 रोल्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिए. किस में डिवाइड कर दिए? 3 कैटेगरीज में.
अब ये जो पर्टिकुलर 3 रोल्स हैं, ये रोल्स हैं इंटरपर्सनल रोल्स। कौन से रोल्स हैं? इंटरपर्सनल रोल्स। ये वो पर्टिकुलर रोल्स हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द इंटरपर्सनल स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल। एवरीवन कैन नॉट बी अ गुड लीडर. Everyone does not have the good charming or the charisma or the aura to welcome the guest or to become the people's person or the charm of the or the particular charm of the person, the personality or the aura. So you can say interpersonal roles जितने भी हमारे पास हैं वो interpersonal abilities के ऊपर dependent है, जिसके अंदर we have leader, liaison and figurehead. तो ये जो 3 पर्टिकुलर हमारे पास रोल्स हैं, ये इंटरपर्सनल रोल्स हैं, and ये roles depend करते हैं on the interpersonal abilities of an individual. Then we have 4, 5 and 6 disseminator, spokesperson and monitor. अब ये जो 3 roles हैं हमारे पास, ये 3 roles हमारे पास informational roles हैं. कौन से roles हैं? Informational roles हैं. और इन्फॉर्मेशनल रोल्स का मतलब क्या है कि यू आर एक्चुअली लुकिंग एट दीज रोल्स. अगर आप इसको क्लियरली देंगे तो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन ही रिसीव हो रही है और ट्रांसमिट हो रही है आगे. जब आप स्पोक्स पर्सन होते हैं तो यू स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ समवन और समथिंग, तो यू एक्चुअली स्पीक अबाउट द इंफॉर्मेशन, यू एक्चुअली कम्युनिकेट, you actually transmit the information. In the role of the disseminator, the manager actually communicates with the workers और information पहुंचाता है upper level की lower level पे, और lower level के जो feedbacks and reports होते हैं उसे provide करता है to the upper level. तो अगेन क्या इंफॉर्मेशन रोल्स हैं, जहां पे आपकी कम्युनिकेशन और यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है. और ये जो हमारे पास 4, 7, 8, 9 और 10, ये जो पर्टिकुलर हमारे पास 4 रोल्स हैं, इट इन्वॉल्व्स द decision making skills, and these are known as the decisional roles. When you become the resource allocator, you decide which particular resource and what to, how to allocate. When you become an entrepreneur, you make the decision regarding the investment and the entrepreneurial decisions. When you negotiate, so again it is involved the decision making, when and where and how much to negotiate. तो ये जो हमारे पास 4 डिफरेंट रोल्स हैं, इसके अंदर हमारे पास डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है. सो बेसिकली हेनरी मिन्सबर्ग ने यहाँ पे इन 10 रोल्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर इन्वॉल्व कर दिया है. सो द मैनेजर must have these different abilities and the skills so in order to play these roles effectively. Is it clear, guys? तो हमारे पास we have interpersonal, informational and the decision role.